नमस्कार। आज सुबह कई अखबारों में जब मैंने धनखड़ साहब का जो वक्तव्य था, जो स्पीच थी, वो पढ़ा तो मुझे दुख भी हुआ और आश्चर्य भी हुआ, क्योंकि जुडिशियल इंस्टीट्यूशन, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे वो हाई कोर्ट्स सारे देश में हो, उनके ऊपर आज के दिन भी अगर किसी संस्था पे विश्वास है तो जुडिशरी पे है। और मुझे ऐसा लगता है कि जब कुछ सरकार के लोगों को जुडिशरी के निर्णय पसंद नहीं आते तो फिर वो आरोप लगाना शुरू कर देते हैं कि ये हद से बाहर है, और जब उनको पसंद आते हैं तो फिर विपक्ष को कहते हैं ये तो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया। कोई सवाल उठाए 370 पे तो ये तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था। राम जन्मभूमि की जजमेंट पे सवाल आए तो ये तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, ये तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था। और अगर हाल ही में जस्टिस पारदीवाला की जजमेंट आई तो ये कैसे सुप्रीम कोर्ट कर सकती है। मतलब कि जो आपको जजमेंट सही नहीं लगे, आपके सोच के अनुसार नहीं हो तो वो तो गलत है, और जो आपके सोच के अनुसार है वो ठीक है। और एक कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरी को ऐसी बात कहनी मैं समझता हूं उचित नहीं है। मैं उनका बड़ा आदर करता हूं, लेकिन आपने कह दिया कि आर्टिकल 142 इज न्यूक्लियर फिसाइल मटीरियल, न्यूक्लियर मिसाइल। ये कैसे कह सकते हैं आप? आपको मालूम है कि आर्टिकल 142 के द्वारा सुप्रीम कोर्ट को संविधान ने यह हक दिया है। ये किसी सरकार ने हक नहीं दिया, संविधान ने हक दिया है टू डू कंप्लीट जस्टिस। पहली बात ये। दूसरी बात, और ये मैं देश की जनता को बताना चाहता हूं कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज ए टाइटुलर हेड। जब प्रेसिडेंट अपनी फंक्शंस करते हैं, वो कैबिनेट की एडवाइस के अनुसार करते हैं। द प्रेसिडेंट एक्ट्स ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। द गवर्नर ऑफ अ स्टेट एक्ट्स on the aid and advice of the council of ministers in the state। कि अगर कोई विधेयक पारित होता है तो गवर्नर के पास जाता है। गवर्नर, संविधान ने हक दिया है, गवर्नर कमेंट्स करके वापस भेज सकता है विधेयक को, और फिर अगर दोबारा पास कर दे लेजिस्लेचर, असेंबली पास कर दे, तो गवर्नर को साइन करना पड़ता है, ये संविधान कहती है। गवर्नर यह भी कर सकता है कि कोई विधेयक को वो प्रेसिडेंट को भेज दे अपने कमेंट्स के साथ कि मुझे ये सही नहीं लगता, और प्रेसिडेंट अपने व्यक्तिगत अनुसार कुछ नहीं करती। प्रेसिडेंट एक्ट्स ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। वो बात सरकार, केंद्र सरकार पे जाती है, केंद्र सरकार के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स पे जाती है। वो एडवाइस करते हैं प्रेसिडेंट को कि क्या करना है। ये प्रेसिडेंट का कोई व्यक्तिगत हक नहीं है। ये धनखड़ जी को मालूम होना चाहिए। उन्होंने कहा कि आप प्रेसिडेंट की पावर को कैसे कंट्रोल कर सकते हो। भाई कौन कर रहा है प्रेसिडेंट की पावर को कंट्रोल? मैं उदाहरण के तौर से आपको बताना चाहता हूं कि एक गवर्नर के पास विधेयक जाए और वो 2 साल वहां पड़ा रहे, वो ऐसा वो अहम विधेयक हो कि जिसकी जनता के प्रति कई चीजें करनी हो, तो गवर्नर क्या बैठ सकता है? 2 साल बैठ सकता है उस मामले में, और कोर्ट को कोई अधिकार नहीं है कुछ करने का। दिस इज इन फैक्ट एन इंट्रूजन ऑन द सुप्रेमेसी ऑफ द लेजिस्लेचर। ये तो उल्टी बात है। पार्लियामेंट अगर बिल पास करे, क्या प्रेसिडेंट उसमें बैठ सकते हैं कि मैं साइन नहीं करेंगे? और अगर साइन नहीं करें तो किसी को अधिकार है कि नहीं?
कि भैया ये ऐसा अहम बिल है, कोई टेररिज्म पे बिल पास हो या किसी और चीज पे बिल पास हो, प्रेसिडेंट ये तो नहीं कह सकता मैं साइन नहीं करते। हाँ, कमेंट्स लेके वापस भेज सकते हैं, दोबारा पास हो, प्रेसिडेंट हैज टू साइन। दैट ये तो संविधान की परंपरा है, ये अदालतों ने डिसाइड कर लिया है ऑलरेडी। तो मुझे इस बात का आश्चर्य है कि कभी तो बेगवाल जी जाकर कहते हैं कि हद में रहना चाहिए, कभी रिजू जी केरला में कहते हैं कि ये क्या हो रहा है, अगर हम भी करने लगे तो, और धनखड़ जी कहते हैं कि ये तो देखिए पुराने टाइम जब 8 जज थे सुप्रीम कोर्ट में तो 5 जज फैसला करते थे, मेजॉरिटी थी, अब तो इतने जज हैं 2 ही जज से फैसला करें। भाई 2 ही जज फैसला करेंगे ना, सुप्रीम कोर्ट तो बेंचेस पे बैठेगा, या 3 जज या 2 जज या 5 जज या 7 जज या 9 जज या 11 जज, और एक बार 13 भी बैठे थे। तो सुप्रीम कोर्ट तो ऐसे ही फैसला करती है ना, 2 जज फैसला करें सारे देश को मानना पड़ता है, 3 करें सारे देश को मानना पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट होती है। आपको याद है जब इंदिरा जी के इलेक्शन का फैसला आया और उनको अनसीट किया गया, तो सुप्रीम कोर्ट के मामला आया कि स्टे क्या देना चाहिए, किस जज का फैसला था? एक जज का, जस्टिस कृष्णा अय्यर, याद है आपको? तब धनखड़ जी सब ठीक था, क्योंकि अब 2 जज का फैसला है वो गलत है, क्योंकि सरकार के पक्ष में नहीं है। बट कृष्णा अय्यर का फैसला बिल्कुल ठीक था, वो तो एक जज थे। तो ये किस किस्म की बातें हो रही हैं पब्लिक डोमेन में? मुझे तो, मैं सोच भी नहीं सकता। आपको मालूम है और सब देश को मालूम है कि जो हमारी लोकसभा है, जो स्पीकर की चेयर होती है वो बीच में होती है, एक तरफ ट्रेजरी बेंचेस, दूसरी तरफ विपक्ष, और उनको कहते हैं स्पीकर ऑफ द हाउस, नॉट स्पीकर ऑफ वन पार्टी, स्पीकर ऑफ द हाउस। और वो वोट भी नहीं करते किसी बिल पे। वोट तभी होती है जब टाई हो, उस सिचुएशन में द स्पीकर कैन, बट ही मे वोट ऑन एनी साइड। यही मामला चेयर अपर हाउस का है। यू आर इक्वी डिस्टेंस बिटवीन द ऑपोजिशन एंड द रूलिंग पार्टी, and everything that you say must be equidistant from that. No chairman, no speaker can be the spokesperson of a party. ये तो नहीं हो सकता ना। मैं ये नहीं कहता कि ये हैं, but no speaker in principle can be the spokesperson of any party. और अगर ऐसा लगता है तो फिर वो चेयर की गरिमा कम हो जाती है। हम तो चाहते हैं कि निष्पक्ष तरीके से काम हो। अभी धनखड़ जी कहते हैं देखिए इतने डिसरप्शन होता है पार्लियामेंट में। वो मुझे याद है सुषमा स्वराज जी जब और अरुण जेटली जी जब डिसरप्शन करते थे तब तो किसी को तकलीफ नहीं थी। तब तो जेटली साहब कहते हैं दिस इज पार्ट ऑफ पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस। ये तो मतलब कि देखिए ऐसा है, जब आपके प्रेसिडेंट जी स्पीच पढ़ती हैं पार्लियामेंट में शुरुआत के सेशन में, तो स्पीच कौन लिखता है? प्रेसिडेंट लिखता है या लिखती हैं? स्पीच तो कैबिनेट लिखती है ना, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स पास करते हैं ना। जो भी वक्तव्य देना हो एज अ गवर्नमेंट, हर चीज पे साइन प्रेसिडेंट का होता है, लेकिन फैसला काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का होता है। ये हमारा सिस्टम ऑफ गवर्नेंस है। अगर आपको कोई तकलीफ भी है किसी फैसले से तो उसको रिव्यू कीजिए। उसकी रिव्यू एक तरीका है ना, रिव्यू डालिए। अगर रिव्यू ठीक नहीं होता तो आगे भी हो सकता है। और अगर आपको लगता है कि इसमें बड़े कोई प्रॉब्लम्स आ जाएंगी तो आर्टिकल 143 के अंतर्गत आप एडवाइजरी ओपिनियन ले लीजिए सुप्रीम कोर्ट से। एडवाइजरी ओपिनियन ले लीजिए सुप्रीम कोर्ट से, ये भी आपको रास्ता है। और अगर इनके पास तो बड़े वकील, ऐसे काबिल वकील हैं जो हम बता देंगे इनको क्या करना क्या नहीं चाहिए। लेकिन एक ऐसा वक्तव्य देना कि अब आर्टिकल 142 इज न्यूक्लियर मिसाइल,
What was a nuclear missile was नोटबंदी, not 142. कि आपने सारी समस्या खत्म कर दी, लोगों की आर्थिक समस्या में, गरीब लोग के पास पैसा नहीं रहा, तब तो कोई तकलीफ नहीं किसी को हुई। और साथ में आपने और कुछ बड़ा कुछ कह दिया। आपने अपनी स्पीच में 1982 की बात की, 84 की बात की। आपने अपनी स्पीच में 1984 की बात की, 2002 की तो नहीं की। आपने इमरजेंसी की बात की, जो कॉन्स्टिट्यूशनली डिक्लेयर्ड इमरजेंसी, जिसके एडीएम जबलपुर ने जिसको अपहोल्ड किया। आपने अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी की तो बात ही नहीं की। ये भी तो इमरजेंसी चल रही है ना। आपने जिस तरह से संस्थाओं का कब्जा हो रहा है उसकी बात नहीं की। जिस तरह से एक पब्लिक, मतलब के बेचारे जो जज हैं वो तो बोल नहीं सकते ना, वो कैसे जवाब दे? वो जवाब नहीं दे सकते। तो आप ऐसे वक्तव्य दोगे, ऐसा लगेगा कि जुडिशरी को एक सबक सिखाया जा रहा है। ये उचित नहीं है, ये संवैधानिक भी नहीं है। फिर आपने एक और अजीब सी बात की। आपने कहा कि जो 14-15 मार्च को किसी जज के घर पे कुछ हुआ, तो उसके पास हमें सुप्रीम कोर्ट में से ऐसी खबर मिली है, यह आपने कहा। रिलायबल सोर्सेस फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट के बताया गया, उसका एफआईआर क्यों नहीं हो रहा? अभी आप तय करोगे वो एफआईआर करना। वो भी एक 5 जजेस का फैसला है, वीरा स्वामी का, कि एफआईआर तभी होगी जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सैंक्शन देगा। तो उस फैसले को नहीं आप मानते? अभी जो फैसले हो चुके हैं उनको मानते नहीं, जो क्योंकि आप सोचते हो कि वो गलत हैं, और जो आप सोचते हो सही हैं क्योंकि सरकार वो ऐसा चाहती है, तो वो सही है। और फिर आपने ये कहा कि उसके खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए, और आज तक कोर्ट क्यों नहीं बताती कि क्या नहीं है? तो कोर्ट आपको बताएगी। ये कोर्ट का एक कर्तव्य है कि आपको जाकर चिट्ठी लिख के बताए कि ये हो रहा है। कोर्ट फैसला करेगी और हम कोर्ट के लिए खड़े हुए हैं। कोर्ट को तथ्य तक पहुंचता है कि किसने साजिश की, किसने नहीं की। और आपको अगर कोई खबर है तो बताइए जनता को, और ये भी बताइए कि किसने आपको खबर दी। ना कोर्ट आपके काम में दखलंदाज कर सकता है, ना आप कोर्ट के काम में दखलंदाज कर सकते। These are lines drawn under the Constitution. And you said in your speech also that the court is acting as an executive. This is not right at all. It is when the executive does not do its job that the court is to intervene, and intervene under the provisions of the Constitution, not intervene otherwise. If the governor of a state says, I will not look at your bills, Dhankar ji, we moved an impeachment motion. We moved an impeachment motion against a judge of the High Court, and that was moved in December. And there were 55 people who signed that motion. We are now where are we now? We are now in May. It's April. So December, January, February, March, April, 5 months. It took you 5 months to find out whether those 55 signatures were genuine or not. And how many more months will it take to find out the genuineness of those signatures? And if you don't sign, if you don't authenticate the signature, don't find out the genuineness of the signatures, that means the motion can't be moved, which is a right given under the Constitution to us. So if you do not, with speed, with expedition, decide this matter, then the argument against us is
that we can't do anything and the judiciary can't do anything. Is that acceptable? And if the governor does not decide and doesn't clear the bill for 6 months, 8 months, 1 year, that means the judiciary can't do anything. Means if the executive does not act, the judiciary can't do anything. If there is a sewage stuff running through a colony and there is a direction by the government that isko cover kijiye and you don't cover it for 2 years, you have to go to the judiciary and get a mandamus. No. If your buses are plying in the city and the pollution levels are so high, then the judiciary has to intervene and stop all this. Don't allow these buses from Noida, from other places to come in. If Diwali crackers are there which are not allowing children to breathe, what else will the judiciary do when you don't do anything? If the executive doesn't do its job, the judiciary must intervene. That's the right of the judiciary. That's the obligation of the judiciary. And they are performing the functions on behalf of the citizens of India. And we are all sitting there in Parliament to do things for the citizens of India. And if you don't do them, the court will give you a mandamus. And if the farm laws are bad, the court will say you cannot implement them. And if sedition is bad as an offense, the court will say stay or no more sedition cases. And if sedition is bad as an offense, the court will say stay or no more sedition cases. And you say no FIR should be filed? Why did you not say this when someone else in the Supreme Court there was a delegation against that person? Why did you not say that? Why don't you file an FIR? I'm not saying allegations was right or wrong, but judiciary said there was nothing in it, so nothing happened. Why did you not question that? And we hear the judge sometimes in Rajya Sabha also. So you should not attack the judiciary. You see, if the executive attacks the judiciary, and especially 2 ministers and the chairman of the House, then it seems that the judiciary can't defend itself. Then the polity of the country must come forward and defend the judiciary. We trust the judiciary in doing the right thing. The independence of the judiciary is fundamental to democracy in this country. Without that, all our rights are in danger, as they already are. बच्चों को जब 5-5 साल जेल में रखते हैं तब तो किसी की आवाज नहीं उठती. महिलाओं को 5-5 साल जेल में रखते हैं तब तो आपकी आवाज नहीं उठती. जर्नलिस्ट को अंदर कर देते हैं बिला वजह तब तो आप कुछ कहते नहीं. आपके जज इलाहाबाद के जब बोलते हैं तब तो आप कुछ कहते नहीं कि एफआईआर क्यों नहीं हुई. जब हाईकोर्ट जज ने कम्युनल स्टेटमेंट्स दी तब तो आपने नहीं कहा. यू नेवर सेड दैट. Then Justice Yadav made those statements in a communal appeal within the premises of the High Court. Why did he not say FIR should be filed? And why should you talk about 1984 and emergency? It seems that you talk about only those events when the Congress was in power. ऐसा मुझे लगता है. because 2014 के बाद तो मतलब कि यहाँ तो दूध की नदियां बह रही हैं इस देश में. उसमें हम सब लोग नहा रहे हैं. ये गलत है. ये संवैधानिक नहीं है. ये गलत है. What is being done is unconstitutional because I have seen Parliament for a long time. And I know the history of Parliament for a long time, including my respected chairman of the House. I have never seen any chairman of the House make political statements of this nature. Even BJP chairman in the past
मेरी आपका तो डिस्क्रेशन है कि किसको बोलने दो, किसको नहीं बोलने दो, किसका माइक बंद कर दो, किसका नहीं बंद, उसमें तो कुछ कर ही नहीं सकते क्योंकि वो तो आपका इंटरनल मैटर है। तो जब जो जुडिशरी का इंटरनल मैटर है वो इंटरनल रहने दो, जो आपका इंटरनल मैटर है हम वी रिस्पेक्ट यू फॉर दैट, वो इंटरनल ही रहेगा। बट ये मत करो क्योंकि जज कुछ कह नहीं सकते, बोल नहीं सकते, और ये एक संदेश हिंदुस्तान की जनता को ये नहीं जाना चाहिए कि आप इस तरीके से जो आपके पक्ष में है वो तो ठीक है जो सुप्रीम कोर्ट करे, और जो आपके पक्ष में नहीं है वो गलत है। ये पॉलिटिकल पार्टी तो कह सकती है लेकिन चेयरमैन साहब नहीं कह सकते। थैंक यू वेरी मच। That's all. Sir, just disturb it in English. I've already said everything in English. वो काट लेना ना। I can say. There is one question. I know you don't take questions, but ये बात कर रहे हैं कि one second. Let me state in English also. Yeah. Yes. Okay. This morning when I read the newspapers, all of them were full of the erudite speech of the chairman of the Rajya Sabha, who made very serious allegations, not only in respect of a recent judgment of the Supreme Court, but also in relation to an incident that happened on the 14th and 15th of March. Allegedly, in relation to some video that was circulated in the outhouse of a judge. Now, as far as the judgment of the Supreme Court is concerned, it is unfortunate that the chairman of the House thought that this is an interference in the powers of the President. In fact, that is not the constitutional position. The President only acts on the aid and advice of the Council of Ministers. The President doesn't have any individual powers to return a bill or to accept a bill. And similarly in states, it's the governor who acts on the aid and advice of the Council of Ministers, except to the extent in which the Constitution gives rights to the governor to act in his own discretion. That's the order, that's the law of the Supreme Court. But in matters of bills, the Constitution says when a legislature of a state passes a bill, the governor has to either agree or to send back the bill for comments after giving his comments. And if the legislature then passes it, then the Constitution says he has to sign. He can also reserve the bill for the comments of the President. And when you say President, comments of the Council of Ministers, because the President doesn't act in his or her individual capacity, acts on the aid and advice of the Council of Ministers. So the matter is sent to the Council of Ministers. They make their comments and send the bill back, and then if the state legislature passes it, then they pass it. That's the scheme of the Constitution. So I don't know how the respected chairman of the House says that this is in violation and that Article 142 has become a nuclear missile. Under Article 143(5) of the Constitution, Supreme Court has been given the responsibility to interpret the Constitution. And what is unfortunate, and which is I'm seeing recently, that when the judgment is in favor of the establishment, then you say, Supreme Court has decided, so you have to accept. This happened in 370. If somebody criticized, but Supreme Court has said. It happened in Ram Janmabhoomi, when people question that judgment, but Supreme Court has decided. But when it comes to this judgment, recent judgment of Justice Pardiwala and Justice Mahadevan, how can Supreme Court do this? So you can't have it both ways. Supreme Court decides, there are ways
to challenge it. You seek a review. There are other remedies. You can have a reference under 143 by the cabinet, by the council of ministers. It's called president's reference. But that reference is also on the aid and advice of council of ministers. And seek an opinion of the Supreme Court. But you can't castigate judges and judgments like this. And I'm sure that judges are very thoughtful. And remember, judges can't defend themselves in a court of law. You can criticize the judgment on legal grounds, but you can't say that you are acting like the executive, because they are not. The Constitution requires the governor to clear the bills. The Constitution requires the president to. Supposing a governor doesn't clear a bill for 2 years, 3 years, the term of the assembly is 5 years. That means nobody can do a thing about it, because you're the executive. So according to some people, the executive is supreme, and what? The courts must follow the leader. That doesn't happen in a constitutional democracy. The day courts follow the leader, then there are no courts. It's about time that all our constitutional authorities should understand that. That's the scheme of our Constitution. Courts do not follow leaders of the country. Courts decide on disputes that come before it and decide in accordance with the Constitution and the laws. If you don't like it, review it. Seek a review. But you cannot challenge it. So please don't make such allegations, because most cases in the history of this country is clear. People are arrested without warrant. People are taken into custody illegally. Right? And this has happened. The executive does it in many cases. Who comes into the picture? The courts. It is because the executive is fallible that the Constitution gives the right to the court to interfere. And if the court is fallible, there is an institutional procedure to correct it. So please don't blame the court for having interpreted the Constitution, because that's the law and that's the Constitution and that's their obligation. So please don't make these statements. Sometimes Meghwal makes this statement. He says, "Had se baat," that means you are going beyond your limits. Sometimes Rijuji says in Kerala that if we start doing this, what will happen if we start interfering? And now the chairman of the House has said something like this. How is 142 a nuclear fissile material? I don't understand that. And why should such extreme language be used, especially with interns? Interns who have come to Parliament to learn. And you're talking about 1984 and you're talking about 1975. Only because it seems that they were Congress governments in power at that point in time. But you don't talk about 2002. You don't talk about what happened after 2014, right till now. You talk about emergency, but you don't talk about the undeclared emergency that we are seeing today. You talk about institutions and see what's happened to our institutions. I remember the chairman of the House himself criticized the farm laws. You are an example of the executive acting which he thought was not entirely correctly. But even that, you see, when you go to Parliament, when you go to the Lok Sabha, what do you see? The chair of the speaker is right in between, equidistant from the treasury benches and from the opposition. Chair is right in between. Why? Because the chair is neutral. You go to the General Assembly in the United Nations, the chair has no proactive role. It just calls upon people to speak in their turn. The General Assembly. You go to any European Parliament. You go to Great Britain. Go to their Parliament. The chairman never takes a position. Speaker never takes a position. And even in our country, speakers have never taken positions. It's only they don't vote. It's only when there is a tie do they vote. So the chairman of the Rajya Sabha or the speaker of the Lok Sabha are non-partisan. They are not spokespersons of any parties. And if they do, if ever they become spokespersons, then they are not performing their job under the Constitution.
I'm not making any allegation, but that's the constitutional scheme, that no speaker, no chairman is the spokesperson of a party, and nor should or he or she be. And that's how I have seen democracy work, as long as I've been in Parliament for almost 30 years now. And I have seen the history of this, of parliamentary democracy work in this country. And there have been many chairmen and many speakers of the House. They don't make highly controversial political statements. Why controversial? Because there are always two points of view, and a speaker or a chairman should not get enmeshed in the politics of the day, because they are above politics. Right? That's their constitutional position. So I think that should be understood. What the office of the president is, what the office of the governor is, should be understood. And politics should not be at the center of discourse of presiding officers of either the Lok Sabha or the Rajya. Thank you very much. सर मैं एक सवाल, मुझे पता है आप सवाल लेते नहीं हैं, लेकिन ये बात कही जा रही है कि एक ऑर्डिनेंस लाके इससे पार, आपने रिव्यू और 143 का रास्ता बताया, लेकिन ये कहा जा रहा है कि कुछ ऑर्डिनेंस लाकर इस आदेश को ओवर पावर करने के लिए कुछ ऐसा कर सकते हैं। आप समझते हैं ऐसा करना सही होगा? पहले तो ये आप कह रहे हैं कि कहा जा रहा है, मुझे तो पता नहीं। जब बात ऐसी होगी तो मैं जवाब भी दे दूंगा। सर आपने कहा कि जेजू साहब, मेघवाल जी, now the chairman of the Rajya. So do you see any chronology in these statements? And I only see an analogy, not a chronology. Analogy को आप देखते हैं, किस तरीके की analogy आप उसमें देखते हैं? नहीं, देखिए ऐसा है कि जब मैं ये अखबार पढ़ता हूँ ना सुबह, तो मुझे पता चल जाता है कि इसके पीछे क्या है। That's enough. मुझे कोई इसमें, देखो जनता सब समझती है, जनता बेवकूफ थोड़ी।